Hello everyone, good morning to all of you. This is Gaurav Khare, Mechanical Engineering, graduated from RGPV and Masters in Thermal Power Engineering from Rajiv Gandhi Technical University, Bhopal. And I have 5 years crucial on-field experience of 500 megawatt and 600 megawatt steam thermal power station from various industrial sector like power sector like Jindal Steels and DV Power Limited. In this pandemic, total scenario gone changed, and our tutorial mode is also modified according to the situation. So let's start with the thermodynamic introduction, that is the part of our syllabus, and we touch here to the basics terminology related to the thermodynamics. So start with the word thermodynamics. Here I also mixed our language and bilingual term, so that is difficulty level is reduced to the Hindi medium student. Thermodynamics term plus dynamics related to heat and its effect in motion. Here therm denotes to the heat. Basically it is a Greek word that is meaning is heat, and dynamics you all know as in the mechanics like static and dynamics. So dynamics related to the effect of motion in the different direction. So overall we can say that thermodynamics is the process or the effect where we all studied about heat and its effect in the motion of different direction. So you can read also in the PPT. Second point is basically related to the energy transformed in form of heat and work. So for an example, we rub our palm with each other so the heat energy can produce. After some time, our palm temperature is raised. So that is related to heat and work. After some time in the thermodynamics, we studied about laws, basic laws of thermodynamics like zeroth law, first law, second law, etc. etc. In other words, in my definition, I also explain thermodynamics is the study of 3 E's. You know, 3 E's. One is denote for equilibrium, second denote for energy, and third denote for entropy. Later in the chapter, later in the subject, we also explore these 3 words. So next point, history related to the steam engine invented by Newcomen. First steam engine invented by Newcomen, and it is used in the mining world. In the mining work to pump the water extract from mining, and later developed by James Watt. And you all know about James Watt engine in 18th century lit and used as locomotive or rail engine. The study effect of energy manipulation in different circumstances, as previously I explained it, where the heat and its related motion study. यहाँ पर हम थर्मोडायनेमिक्स की अगर बात करें, हिंदी में इसको ऊष्मागतिकी भी बोलते हैं। ऊष्मागतिकी के सिद्धांत यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे और उनके अलग अलग टर्मिनोलॉजी या अलग अलग स्टेप्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के पहले उसके एप्लीकेशंस जानने बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करता हूँ, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपके और भी काफ़ी सब्जेक्ट्स आगे जो कि इंटर रिलेटेड हैं थर्मोडायनेमिक्स से, जैसे कि उनमें से सबसे पहले आता है थर्मल इंजीनियरिंग एंड गैस डायनेमिक्स। उसके बाद आता है हीट मास ट्रांसफ़र, जिसको आप HMT के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आता है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जिसको आप RAC के नाम से भी जानते हैं। तो इन सारे सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करने के पहले आपको थर्मोडायनेमिक्स बेसिक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसलिए सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी ने आपके सिलेबस में ऐड किया है ताकि आप बेसिक्स या रूट जिसको हम बोलते हैं
चाहे वो गेट की प्रिपरेशन के लिए हो, चाहे वो ईएस की प्रिपरेशन के लिए हो। थर्मोडायनेमिक्स इज द बेस ऑफ, या मैं अगर अदर वर्ड में बोलूँ तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, इट इज़ द रूट और मदर ऑफ ऑल अदर सब्जेक्ट रिलेटेड टू द थर्मोडायनेमिक्स। ओके, सो एप्लीकेशन पे हम थे। जैसे कि मैं एप्लीकेशन की बात करूं